very cold Saturday afternoon in London. Nazreen, you all know today as we speak, there is destruction, there is chaos, there is confrontation, there is devastation. इन सब चीज़ों का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हर इंसान पे है, चाहे आप इन्वॉल्व हो ना हो, चाहे आप टीवी पे खबरें देखें ना देखें, चाहे आपकी बहस मुबाहिसा इस चीज़ पे हो रही है, चाहे आप लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो परेशान कुन सिचुएशन इस वक्त है वो ये है कि वैसे तो हर शख्स पे इसका इम्पैक्ट है, मासूम जानों का ज़िया, खून की नदियां बह रही हैं, ईमान हमारे हाथ से छुटता चला जा रहा है, सच को झूठ और झूठ को सच कह रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशान कुन बात है, जैसे मैं कह रही थी कि वो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हमारे नौजवान नस्ल पे बेइंतहा पड़ चुका है। आप ये देखिए कि उनमें कोई मोटिवेशन नहीं है, दे हैव स्टॉप्ड फॉलोइंग देयर ड्रीम्स। उन्हीं ने अपना गम गलत करने के लिए शराब और नशे का सहारा ले लिया है। जी जी के मर रहे हैं, मर मर के जी रहे हैं, कोई उनको समझाने वाला नहीं है, वालिदैन परेशान है। अच्छा, हम तो ये जो हम बात कर रहे हैं वो मगरिब में रहने वालों की परेशानी का हाल है, लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि जाहिर है जो मगरिब में कुछ बाहर की छाप आपके जरूर पड़ती है, 24 में से 12 घंटे तो आपका एक्सपोजर होता है, बच्चों का भी। लेकिन सबसे ज्यादा जो अफसोसनाक हालात है वो हमारे अपने मुल्क के नौजवान। आप गौर कीजिए कि स्कूल्स में 13-14 साल के बच्चों से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटीज में लोग ड्रग्स में, शराब में, मतलब धुत हुए में है। मगरबियत उन्हीं ने अपने ऊपर ज्यादा तारी कर ली है। पता नहीं क्या यही सब कुछ इम्पैक्ट, क्या ये हालात की वजह से हो रहा है, ये क्या है, किस सिमत हम लोग चल पड़े हैं। आज मैं सोचा था कि इस सियासत की गुफ्तगू नहीं होगी, लेकिन ये चीज मेरे पास बहुत ज्यादा लोगों ने की कि प्लीज इस पे बात करें, नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पर है। तो जाहिर है, और ऊपर से ये वॉर हो रही है, इसकी वजह से भी जाहिर है सबके हालात अजीब नागुफ्तबे हो चुके हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी। तो हमने आज अपनी जो मेहमान को दावत दी, ग्रेटफुल एंड आई एम प्रिविलेज टू हैव हर, क्योंकि और वो अपने क्लाइंट्स की जो ट्रीटमेंट करती हैं वो स्पिरिचुअली एंड इमोशनली रादर देन सुपरफिशियली। तो मैं उनका छोटा सा आपके साथ उनका तारुफ कराती चलूं। माय डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट इज उज़मा नकवी. Uzma is a founder of global non-profit organization Club 313, 313, dedicated to youth empowerment, dedicated her career to enriching and transforming women's life with a proactive approach. She believes that people tend to lose the value of themselves, जैसे कि आजकल हमारे नौजवान हैं, and stop following their dreams. And there are various stages of their lives, and they find it hard to make any decisions on their own. इसी वजह से तो वो अपना गम गलत करने के लिए शराब और नशे में धुत रहते हैं. And she has also introduced a year-long step-by-step program called Universe Within You. It is a holistic transformation program. और आप सब इनकी गुफ्तगू से, इनकी इल्मियत से, इनकी एक्सपीरियंस से कुछ मुस्तफेज होंगे. सो प्लीज वेलकम माय डियर वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट उज़मा नकवी साहिबा. अस्सलाम वालेकुम उज़मा. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair. It's an honor for me actually to be with you again. So thank you for the invitation. थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया. आपने वक्त निकाला. मुझे मालूम है आज इस वक्त थोड़ा सा आपके साथ कुछ थोड़े से ऐसे भी हालात हैं कि यू हैव टू रश बैक, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम विद अस. अच्छा बेटा, जैसे मैंने अभी ये कहा कि आपने जैसे कहा ना कि नौजवान नस्ल को आप ज्यादा इस पे वो करती हैं, क्या क्या देख रही हैं कि इसका कोई इलाज है, कोई एंड है इन चीजों का,
और अगर है तो क्या है? आप जैसे लोगों की ज़रूरत है या वो जो दवाइयाँ दे के ड्रग्स मतलब डिप्रेशन एंटी डिप्रेशन दे के ठीक करते हैं या वो है? प्लीज़ थोड़ा-सा इस पे आप लाइट डालिए। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर। हालाँकि हमारी गुफ्तगू का इनिशियली जो हमने डिसाइड किया था उससे बरअक्स है, लेकिन बहुत अच्छा किया आपने कि ये टॉपिक आपने शुरू किया, क्योंकि it's extremely important that we discuss these things. या या And मैं एक बात करूँगी जो थोड़ी सी होप देगी, और एक बात करूँगी कि ये बात है, दुरुस्त है जो आपने कहा हुँ, है, ये बिल्कुल हुँ, it's the reality unfortunately that we live in. So let's talk about the hope first. अच्छी चीज़ को पहले डिस्कस कर लेते हैं. I think that there is kind of a split between two types of people. What एग्री I'm seeing, what I'm viewing, what I'm experiencing, how I'm speaking to people, what I'm researching, generally speaking, there is this vast majority of people that are suddenly waking up to a new reality. There's हुँ, this shift taking place. There is this new awareness. There is so much knowledge and information out there, and a lot of people are starting to utilize what they have their hands in. और आजकल का जो यूथ है वो सवाल करते हैं और उस सवाल का जवाब ढूंढने में इंटरेस्टेड हैं. दोज दैट आर फ्रॉम फैमिलीज दैट आर अवेकेंड, या फिर वो खुद अपने हालात से पुश होके अपनी ज़िंदगी में तहकीक करना चाहते हैं कि why are we here, what's going on in the world, how does that impact me. There is a big large amount of people around the हुँ, globe, not just Muslims, other people as well, that are नो, really waking up, especially in the face of what's happening right now as we speak in the world. I बिल्कुल, think that's बिल्कुल, huge boost and a big wake up call to a lot of people, be it in the West or in East or anywhere else. So हुँ, alhamdulillah, there is something happening, and this is all in my belief, in our belief, this is all in the wake of inshallah जो हम इंतजार कर रहे हैं अपने मौला साहिब अल असर व ज़मान का. ये उनकी एक आप यूं कह लें कि प्रेपरेशन में ये सारा कुछ है. So there is सही, that glimmer of hope कि there is something nice happening, but we cannot ignore हुँ, the fact कि there is also sadness, there is also depression, there is also all sorts of things going on that have been going on for a long time, and हुँ, those are very real realities that we must discuss. And there are hundreds of things to be said about that कि उसके causes कितने ज़्यादा हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ को बंदा डिस्कस करे. पर एक उसका जाविया जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी आज, due to lack of time, I will talk about the fact that a human being, when they come into this world, they have certain needs. They come into the world with certain needs. हर इंसान की हुँ, नीड है कि उनके सर्टनिटी हो. सर्टनिटी यानी कि वो जिंदा रहेंगे, सलामत रहेंगे, उनको खाना पीना मिलेगा, वो सो सकेंगे, वो जाग सकेंगे, वो सारा मतलब उनको एक लव मुहैया होगी जो उनको चाहिए. ये सारे हुँ, इंसान जितने भी पैदा होते हैं, जहाँ भी पैदा होते हैं, जिस भी सिचुएशन में पैदा होते हैं, there are certain needs to have met when they are born, and हुँ, as they growing older, ये जो हुँ, नीड्स होते हैं इंसानी कोर नीड्स, अगर ये हुँ, नीड्स हमारे पूरे ना हों, या उस तरीके से पूरे ना हों जिस तरह हमारी ज़रूरत है, या उसके हुँ, बरअक्स चीज़ हो रही हो, तो this causes a huge amount of disruption in our systems and in our beliefs, in the way that we see ourselves, in the way that we view the world around us, in the way that we connect with other people, in the way we carry relationships, in the way we will hold a career down or not, in the way that we will have our own children and what we will pass on to them. So I think it's an हुँ, important thing to discuss कि जब एक इंसान पैदा होता है, कोई भी जब इवन एडल्ट्स में हम देखते हैं कि बिहेवियर्स जो लोग बहुत ट्रिगर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से से भरे हुए होते हैं, या ड्रग्स या अल्कोहल जैसे आपने मेंशन किया इस चीज़ में बढ़ जाते हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस बिहेवियर कि ये जो बिहेवियर है कहाँ से शुरू हुआ, इसकी रूट कोज क्या है, बिकॉज इट्स अ रिस्पॉन्स टू समथिंग. कोई भी इंसान हुँ, इनेटली ऐसा पैदा नहीं होता. Yeah. So root cause क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ है. It is हाँ, very necessary for us to see कि जब ये बच्चा पैदा हुआ था, उसकी environment और उसका upbringing और उसके साथ जो relationship थी, उनका अपने parents के साथ relation कैसा था, उनके peers कैसे थे, उनके teachers कैसे थे, वो क्या पढ़ते थे, वो क्या देखते थे, वो क्या सुनते थे, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत बड़ा असर करती हैं. And हुँ, particularly children who've been through any kind of a trauma, that's even more हाँ, हाँ, paramount. And you know, when we say trauma, एक तो ये trauma है जो आज दुनिया में हो रहा है, right? जो हम देख रहे हैं कि it's unspeakable amount of trauma. That's one side of the बिल्कुल, trauma. उसके तो
उसके तो असरात हैं ही हैं, मतलब वो डिस्कशन की बात ही नहीं है कि वहाँ ये असरात एब्सोल्युटली उनकी ज़िंदगी में ताहयात रहेंगे, उनको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होगी। लेकिन दूसरा जो ट्रॉमा, जो हम बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कस करते, नॉर्मल एवरेज पाकिस्तान फैमिली, नॉर्मल एवरेज हमारे जो मुसलमान फैमिलीज़ हैं, इनमें जो हम ट्रॉमा समझते ही नहीं है, जहाँ एक बच्चे को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की इजाज़त नहीं होती। हमारा जो क्या बच्चा बात। रोता है, तो हम क्या कहते हाँ, हैं, खामोश हो जाओ, मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता इससे आगे, चुप हो के बैठ जाओ, बहुत हो गया। क्योंकि हम इतने अनकंफर्टेबल होते हैं जब बच्चा अनकंफर्टेबल होता है, वी डोंट नो हाउ टू डील विद दैट। सो एज एन अथॉरिटेटिव फिगर हु हैज अ होल्ड ओवर दिस चाइल्ड, द फर्स्ट थिंग वी विल से इज चुप करके बैठ जाओ, मैं सुनना नहीं चाहती, ये सुनना नहीं चाहता। And what that does, and the message, and this is just one tiny example, there are hundreds, thousands of other examples of how, मतलब comparison होता है between siblings। देखा आपके भाई ने कितना अच्छा किया था, आप इतना घटिया, आप इस तरह करते हो, आपकी नहीं आते। कंपैरिजन बिटवीन सिबलिंग्स, या आपने फलां का बच्चा देखा है कितना अच्छे रिजल्ट्स लेके आया है और आप इतने गधे हो और आपको समझ नहीं है। ये नॉर्मल लैंग्वेज हमारी फैमिलीज में, दिस इज ट्रॉमा। ओके, तो इसमें हम बच्चे को एक मैसेज देते हैं और हम समझते हैं कि हम उनको डिसिप्लिन कर रहे हैं, हम उनको समझा रहे हैं। एक्चुअली दिस इज डीप डीप इन देयर सबकॉन्शियस माइंड, आई एम नॉट गुड इनफ। ओके, जब मेरी जो एक्सप्रेशन है, मेरी जो इमोशंस है, उनकी कोई जगह नहीं है यहाँ पे। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता या कर सकती, एंड सो इट टर्न्स इनटू वेरी सिवियर टाइप ऑफ बिलीफ सिस्टम्स इनसाइड ऑफ आवरसेल्व्स। और वो अनमेट नीड्स जो होते हैं, दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल कि वो एडल्ट जाके वो उसकी जिंदगी कैसे होगी, वो दूसरों के साथ रिलेट कैसे करेगा, वो सारा कुछ उसका एट अ सबकॉन्शियस लेवल उसका एक प्रोग्रामिंग हो जाती है कि मैं एक फेलियर हूँ। अब वो बच्चा जिसको बताया गया कि आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, आप यू आर नॉट गुड इनफ, वो जाएगा शायद यूनिवर्सिटी में, या यूनिवर्सिटी के बाद वो जॉब इंटरव्यू के लिए जाएगा, उसको वो कहेंगे कि आपको जॉब नहीं मिली। दैट failure is a very normal thing for a person, right? But for a child who was given that message from the beginning, उस बच्चे के लिए एक और stamp मिल गया as to prove कि yes, I am a failure. The mind says, see, I told you, you're not capable of anything, because that's the programming that they carry at a very subconscious level. और फिर उनमें बहुत anger और बहुत ज़्यादा एक hostility आ जाती है, और उनको खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि मैं ऐसा क्यों हूँ, क्योंकि कुछ मेमोरीज इतनी ट्रोमैटिक होती हैं कि वो उनको याद भी नहीं होता कि मेरे साथ हुआ क्या था। कितने सारे लोग हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल दैट आई वर्क विद, व्हेन दे वर यंगर, उनकी इसी तरह की स्टोरीज हैं, और अब एज एन एडल्ट दे फील ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल। उनको पता भी नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी को आगे कैसे चलाऊं। And when we talk about it, when we go into it, when we start looking at the root cause, उनको बहुत सारी चीजें उभर के सामने आती हैं कि this is the reason I am like this today. And by the way, I want to say the disclaimer, I'm not sitting here to blame the parents. I'm a parent myself. I know the hardest job in the world is being a parent, especially in the West, especially in the current climate with the way things are going on. So I'm not bashing the parents, but I'm just saying that if we are not mindful, if we are not understanding the needs of a child, and if we're not helping them to have those needs met, then we are creating traumatic children who are going to be adults who are going to be triggered by everything, और उनकी जिंदगी में जगह जगह को मुश्किलें मुसीबतें का सामना करेंगे। और फिर जब ये टू मच हो जाता है ना, you have to channel all this aggression, all this energy, all this hostility somewhere, कहीं ना कहीं तो उसको जाना है ना। इसमें फिर आप ये जो नजर आता है सामने कि जिस बच्चे की जरूरत थी कि मुझे अनकंडीशनल लव मिले, उसको नहीं मिली, उसको रूल्स रेगुलेशंस, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के जरिए बताया गया कि यू आर नॉट गुड इनफ। अब वो बच्चा बड़ा होके ही हैज टू चैनल दैट एंगर एंड एग्रेशन समवेयर। He can very easily turn to drugs. He can very easily turn to alcohol. He can very easily turn to even ये जो LGBTQ और ये सारी चीजें राइज भी हो रही हैं हमारे मुसलमानों में, क्यों हो रही हैं? हमें ये सवाल करने हैं, हमें ये पूछना है कि ये क्या है। फिर हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमारा बच्चा ये निकला वो बच्चे की गलती नहीं है, एनवायरनमेंट जिसमें वो बड़े होते हैं उसमें वो होता है। और हमारा जो डिस्कनेक्ट है बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम की वजह से जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हम ये इरेडिकेट नहीं कर सकते जो मसले हम फील कर रहे हैं आज हमारी एनवायरनमेंट में।
तो फिर उस्मा बेटा ये फिर इसका मतलब ये कि रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स जो है, मतलब आप लाइक यू सेड कि यू डोंट वांट टू ब्लेम पेरेंट्स, बट एट द सेम टाइम पेरेंट्स आर मतलब ये कि मेजर जो इसमें जो कैरेक्टर कह लें या जो प्ले किया है पार्ट उनकी शख्सियत बनाने में बच्चों की, वो पेरेंट्स ही तो हैं पेरेंट्स हैं। कि और नहीं? देखिए, the easiest way that I would like to explain this so that the parents don't feel like they're being bashed completely, because that's not my aim नहीं, नहीं, at all. हाँ, I नहीं, work with नहीं, बिल्कुल। parents as well. तो my analysis of especially being a parent myself and also working with so many parents is that parenting is there to take you up a level in your own journey of spiritual growth. जब हम अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में हमारी मुश्किलात आती हैं, कितनी बार कुछ-कुछ हो जाता है, मतलब कभी किसी औरत को तलाक हो जाती है, कभी किसी के बच्चे छिन जाते हैं, कभी किसी का लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है उनकी फैमिली में, या जो ये सारे बड़े-बड़े ट्रेजेडीज़ जो हैं होते हैं, इनमें से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव आता है, राइट? बहुत सारा चेंज आता है। इसलिए हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की सही जो अगर उसको हम सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में अपनाएँ, तो वो ये है कि खुदा की तरफ से खुदा की तरफ जाना है हर चीज़ ने। तो इसमें से मेरा लेसन क्या है, इसमें मैंने सीखा क्या है। तो इसी तरह जब हमारी ग्रोथ होती रहती है इन चीज़ों के साथ, देयर कम्स अ टाइम वेयर आवर ग्रोथ इज स्लाइटली स्टंटेड। और जो औलाद होती है, एंड स्पेशली वो औलाद जिसको हम ब्लैक शिप कहते हैं, वो औलाद जो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी होती है, जो हमारे नाक में दम करके रखती है, वो औलाद जिसके साथ हमारी टसल ज़्यादा होती है, दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड टू यू। और हमारा मसला ये है कि उसी बच्चे को हम सबसे ज्यादा बुरा भला कहते हैं, हम सबसे ज्यादा उनको एक्सपोज करते हैं कि ये तो नाक कटवाने वाला हो गया। हालांकि वही बच्चा होता है जो आपके लिए इतना बड़ा तोहफा बन के आता है, ताकि आप अपनी जात को मजीद एनहांस कर सके, अपनी जात के बारे में आप मजीद सोच सकें कि वेयर वॉज माई ग्रोथ stunted, what did I not learn from my past experiences that I can learn with this? ये जो नस्ल हो रही है मेरे बच्चों के दरमियान, ये क्या है, right? So we need to understand that when parents feel frustrated, it instead of feeling defeated, instead of feeling like I don't even know what to do, they should sit and question themselves कि ये जो ज्यादा फ्रिक्शन है, या सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है बिटवीन मी एंड माय चाइल्ड, व्हाट इज इट अबाउट? ये जो रफलिंग फेदर्स, ये किस चीज के बारे में हो रहा है? Within that will lie an answer. That's where your growth is needed, and that's where the child will take you on the next journey, next version of your own self. So I think there is a need to have an open mind, open heart, open discussions, open communication methods, so that we can have very, very open way of talking to our children, talking to ourselves, talking to our spouses, so that इसके लिए एक growth का वो बन सके environment, rather than seeing something as just a problem. इसके साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये बस अल्लाह के हाथ में हमने छोड़ दिया है. There is an action to be taken, and we must see as something way deeper than just a problem that we're having to face. Like you said, to have an open discussion with your children. I mean, there got to be a good relationship, like a friendly relation जो होता है, वो अगर औलाद और वालिदैन के दरमियान हो तो फिर ओपन डिस्कशन हो सकता है. बट इन दिस डे एंड एज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, द पेरेंट्स आर scared to speak their minds with their children. I mean, this, yes, you're absolutely right. There is a huge number of families जहाँ पे कितनी बड़ी दरार आ चुकी है कि almost लगता है कि ये कभी फिल होने वाली नहीं है. लेकिन इसमें मैंने पहले भी इस बारे में काफ़ी सारी टाइम बात की हुई है कि I think we need to have a realization कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि बस इनको खाना खिलाओ, इनको कपड़े अच्छे पहनाओ, इनको कहीं बाहर लेके चले जाओ, वापस ले आओ, सुला दो, उठ के फिर वापस स्कूल चले जाएंगे, फिर जितना टाइम वो दूर रह सकते हैं रहें, तो फिर हम जो थोड़ा सा टाइम उनके साथ वो व्हाट्स मिसिंग फ्रॉम दिस कॉन्स्टेंट, लाइक एक साइकिल जो हमने बना ली है, एक रूटीन जो है इतनी फास्ट कि टाइम का पता ही नहीं चलता. दिन शुरू होता है, दिन खत्म हो जाता है, ऐसे लगता है हुआ कुछ नहीं, हमने किया कुछ नहीं आज, लेकिन बिजी सारा दिन थे. तो ये समझने के लिए हमें द मिसिंग एलिमेंट इन ऑल ऑफ दिस इज क्वालिटी टाइम. आप यकीन जाने, आप एक बच्चे के साथ सिर्फ 10 या 15 या 20 मिनट्स अ डे, 1-to-1
uninterrupted, without phone, without TV, without any screen, अगर आप one to one, I guarantee you, जो भी बंदा सुन रहा है मुझे, आप मुझे चैलेंज कीजिएगा, मैं सारे सोशल मीडिया पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं. I am challenging you today as a parent, and if you're a parent listening to this and you're frustrated कि टाइम नहीं मिलता, आप 20 मिनट निकालिए और ये हफ्ता आप ट्रायल पी लीजिए. This week आप you try to spend 20 minutes of your day uninterrupted अपने बच्चे के साथ one on one. आप देखिएगा और मुझे रिपोर्ट कीजिएगा कि आपकी और आपके बच्चे की रिलेशनशिप बेहतर हुई है या नहीं हुई. I think the biggest problem in this, the challenges that we face is that जब वो छोटे होते हैं उनके साथ हमारा कोई उस तरह one to one proper bonding नहीं होती. ठीक है, फिर जब वो थोड़े से बड़े होते हैं, अब वो आउटसाइड वर्ल्ड में चले गए हैं, अब उनको दूसरे इन्फ्लुएंसेस मिल चुके हैं, अब उन्होंने फ्रेंडशिप्स फॉर्म कर ली है स्कूल में, अब उनको ओन करने के लिए ये इज्म और वो इज्म आ चुका है. अब हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अब हम हमारे हाथ ऊपर है, अब हम कहते हैं या खुदाया हमारा बच्चा गुमराह हो गया, रास्ते से हट गया, फलां हो गया, फलां हो गया. Now we want to build a bond with our child. The child's not interested. Why would he be? Yeah. जब उसको जरूरत थी, जब बताना चाह रहा था अपनी फैमिली को स्टोरीज, अपने स्कूल की, अपने फ्रेंडशिप्स के बारे में, अपने एक्सप्रेशन के बारे में, मैं यूं फील करता हूँ, हम उसको नहीं सुनना चाहते थे, हम कहते थे चुप होके बैठ जाओ. और अब हम चाह रहे हैं कि हमें बताए तो कहेगा आप चुप होके बैठ जाएं. आई डोंट वांट टू शेयर विद यू, क्योंकि आपको तो समझ ही नहीं है, हमने कभी अंडरस्टैंडिंग दिखाई ही नहीं, हम टेबल पे बैठे ही नहीं, हमने इन चीजों को डिस्कस ही नहीं किया. तो फिर अब हम डिमांड कर रहे हैं कि अब वो बड़े हो गए हैं, अब वो बाहर जा चुके हैं, अब हमें खतरा है, अब हमारा दीन क्वेश्चन में है, अब हमारे लोग क्या कहेंगे, लोगों के सामने हमारी जो इमेज है वो टार्निश हो रही है. अब हमें बच्चे के लिए कम्युनिकेशन चाहिए. I think, I'm not saying it's never too late. I work with people who have older, like even adult kids and, younger as well. So it's never too late. There is always a way to create bonds and to start a whole systematic way of being in a family. But I think it is a realization for parents to understand. और उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको जिस तरीके से बड़ा किया गया था वो उसी तरह आगे लेके जा रहे हैं. हम अक्सर हमारे पेरेंट्स कोई डिमांड नहीं थी, जिस तरह कहते थे वो कहते थे खड़े हो जाओ, हम खड़े होते थे, वो कहते थे बैठ जाओ, हम बैठ होते. उनकी आंखें इनफ थी. अब मुझे याद है अम्मी ऐसे आंखें बस यूं थोड़ी बड़ी करके देखती थी, बंदा कांप के रह जाता था, जल्दी जल्दी से करो, वो करना कहना क्या चाह रही है, वो काम फौरन से हो जाए. We are not in that era anymore. If you're expecting that obedience from your child, I'm really sorry to break it to you कि आप इतनी गलत ट्रैक पे जा रहे हैं कि you will lose your children to this world. You will lose your children to addiction, sorts of things. So we have to have an awakening. We have to move along with, especially जब हमने फैसला किया हमें बेहतर जिंदगी चाहिए, हमें कुछ लग्जरी चाहिए, हमारी जिंदगी आसान होनी चाहिए, इसलिए हम वेस्ट में आके रहेंगे. डिग्री हमें वेस्ट की चाहिए, कपड़े हमें वेस्ट के चाहिए, घर हमें वेस्ट के चाहिए, गाड़ियां हमें वेस्ट की चाहिए, बच्चा हमें वो जो वहाँ का चाहिए कि वो बिल्कुल इस्लामिक अटायर और सारा कुछ उसका बिल्कुल सही. ये दो बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रास्ट्स हैं, ये मुतजाद चीजें जो एक साथ जुड़ नहीं सकती. सो आई एम नॉट सेइंग दैट मेक देम लिबरल्स एंड लेट देम गो, एब्सोल्युटली नॉट. आप देखेंगे कि जिस भी फैमिली में एक बॉन्डिंग है बच्चे के साथ, वो बड़े होके आपकी हर वैल्यू की इज्जत करेंगे, दिल से करेंगे. जब हम फोर्स करके कहेंगे ये करना ही है और इसी तरह करना जिस तरह मैं कह रहा हूँ, वो उतने ही दूर भागेंगे उस वैल्यू से. इवन वो वैल्यू उनके लॉजिकली मेक सेंस कर रहा है, लेकिन वो उस पर नहीं होंगे, बिकॉज देयर इज अ रिजेंटमेंट इन द वे दैट इट्स अप्लाइड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इस चीज को समझें और हम उस चीज को अप्लाई करें और किस तरह अप्लाई करें. It's very important. I give you a personal example, not something easy to talk about, but honestly, I was the very last person to observe hijab in my family. The very last girl. हमारी families में बहुत ज़्यादा normal चीज़ थी कि 9 और even 9 से पहले hijab जो है ना वो किया जाता था. But I remember the way that it was taught to me by my father. There was a lot of force, and there was no description or there was no explanation, there was no love in it, right? कि ये चीज क्या, right? अब मुझे कोई कत्ल कर सके कि तुम्हारी जिंदगी इसी पे है कि तुम ये हिजाब उतारोगी, मैं कहूंगी कत्ल कर दें. I would never remove this for the life of me. I would never remove this, inshallah. So why? Because I've learned what this means. I'm doing it with meaning now, with my own internal desire. When it was forced upon me, I did not want to observe it, and it took a long time to understand.
सो जब हम किसी भी चीज को जोर से करने की कोशिश करेंगे, जोर क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्ट जिस चीज को भी हम रेजिस्ट करेंगे वो इतनी ही प्रसिस्ट करेगी। इसलिए वी नीड टू टेक अ बैक सीट, वी नीड टू टेक अ ब्रीदर, वी नीड टू राइट डाउन कि प्रॉब्लम्स क्या है, टसल क्या है, मसला क्या है, उस मसले को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। इफ यू कांट रिजॉल्व इट, देयर इज सो मच हेल्प आउट देयर। आजकल मैं ये सुनना भी नहीं चाहती हमारी कम्युनिटी से कि वी डोंट नो हू टू गो टू, वी डोंट नो व्हाट टू डू। अगर आप पे नहीं कर सकते हो तो फ्री में हेल्प अवेलेबल है ऑन यूट्यूब। हमारे माशाल्लाह आजकल इंग्लिश लेक्चर्स इतने ज्यादा होते हैं, बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। इट्स नॉट एन एक्सक्यूज एनीमोर टू बी oblivious and you know we don't know। ये अब वो सही। चीज नहीं रही है कि हम लेकिन वही बात है ना उज़्मा, कि जैसे आपने कहा कि बस कह दिया कि हिजाब लेना है, ठीक है, लेकिन हमारे आबा अजदाद का या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का भी तो कसूर नहीं। जो उनको कहा गया वो उसी तरह आपको समझा रहे हैं। अब ये अवेयरनेस जो आई है ये आपको सोशल मीडिया और माशाल्लाह यूट्यूब पे कितनी भरमार है हर चीज की। जी अब कोई भी सवाल कीजिए और बिल्कुल आप देखिए आपको वहां जवाब मिले। तो उनका भी कसूर नहीं था, लेकिन आपने खुद अपने अंदर की एक आवाज सुनी और आपने कहा नहीं, मैं कुछ और वजूहात हैं जिनकी वजह से मैं, जैसे कहा कि 9 साल की उम्र में हिजाब लेने, लेकिन आपने लिया जब आपको खुद तसल्ली हुई, इत्मीनान हुआ। अच्छा, कैन वी शिफ्ट, आप सवाल एक आ गए, कैन वी शिफ्ट लिटिल टुवर्ड्स नाउ टू हम लोगों की एल्डरलीज की और क्या कहते हैं यंग हाउसवाइफ्स कह लें और प्रोफेशनल लेडीज का है। कह रहे हैं कि हाउ वुड यू गेज माय हैप्पीनेस एंड व्हाट डू आई डू टू लुक हैप्पी? it's a very powerful question। देखिए, I have a different way to talk about happiness। हाँ, And this is a part of a very vast learning journey that you have to go through. So I don't know in this very small glimpse how it's going to come across. And I would love to have this discussion someday in a lengthier manner. But my take on happiness, we've made happiness a goal, right? And we've kind of removed the element of the journey of our life, and we've become really fixated on making happiness this goal that we must achieve। और जब भी हमें लगता है कि हम इस गोल पे नहीं पहुंच रहे, जब भी लगता है कि पहुंच गए हैं, तो फिर लगता है कि फिर से टूट गया, अब कोई वो नहीं है। In doing this, in making happiness like a goal, we've removed this whole concept of joy, of happiness entirely from our everyday lives, from little moments, from the fact that I have the ability to sit in my room right now and speak with you, and we're talking about something that's very important. There is joy in this. There is someone out there listening जिसको ये चीजें resonate कर रही होती हैं. There's a joy in this. हम इन चीजों को completely for granted लेते हैं. They mean सही। nothing to us. Right? We've made this big goal। जब मैं यहाँ तक पहुंचूंगी, जब मेरा ये चीज अचीव हो जाएगी, जब मैं ये इस जगह पे आ जाऊंगी, फिर मेरा हैप्पीनेस जो मैं टिक कर सकती हूँ बॉक्स में कि आई एम हैप्पी। एंड दिस इज अ वेरी रॉन्ग एंड डेट्रिमेंटल वे ऑफ लुकिंग एट दिस। वी वांट टू बी हैप्पी, but because it is not making us happy, we are left only with unpleasant emotions, searching for happiness all the time। Right? So we begin to feel like हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है, हम तो बस जिंदा ही इसीलिए कि हमारे साथ खराब चीजें होती रहेंगी। We're holding on to this painful thought that we should be happy, हमें खुश होना चाहिए जब हम नहीं है। Right? And so these reactions and the way that we're looking at happiness, it makes us even more unhappy। क्यों? हम कितनी एनर्जी डालते हैं इस चीज पे कि हमें हैप्पी होना है। In this chase, we end up resisting a lot of negative emotions to avoid unhappiness, right? And so we become very resistant to unpleasant things that are happening in our lives. And when we become resistant to the suffering of our life, it completely dismantles the whole idea of what happiness is. Our desire for happiness seems so desperate because we want something, but we don't think we have it। So we focus so much on suffering and unhappiness, trying to eliminate it, trying to eradicate it, हमारी जिंदगी से ये चीज खत्म हो जाए। But in this very resistance, in this desperate chase for happiness, we are ending up feeding our suffering because we are putting so much energy and so much focus on the fact that we are unhappy।
right? So what do we do? Hmm. What do we do? अगर ऐसा है कि हमें लगता है कि बस हर वक्त बुरा ही हो रहा है, एक चीज है अल्लाह सुब्हाना ताला ने बड़ी खूबसूरती से हमें बताया है कि surrender. This is a Hmm. huge concept, big vast topic that I teach about surrendering, right? Surrendering. Surrendering to the point where अल्लाह पे इस कदर भरोसा, तवक्कल, कन्विक्शन आपके दिल के अंदर पैदा हो, अपना Hmm. ईमान इस कदर पुख्ता हो जाए कि जैसे आज हम अपनी टीवी स्क्रीन पे, बल्कि टीवी पे तो वो दिखाते नहीं है, अपने फोन की स्क्रीन पे हम देखते हैं कि व्हाट रियल तवक्कल लुक्स लाइक, व्हाट रियल तवक्कल लुक्स लाइक। और करबला ने हमें सिखाया, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हमें सिखाया। आई नो आई एम गिविंग सम वेरी vague way of looking at this, but honestly, if I had one-to-one conversations, or if I was to able to like teach you this properly, I would explain to you. And it's surprising to me that every single woman that comes into my circle, when we talk about this topic, they change their mind about what they thought of happiness before and what they think of happiness now. And just with that shift, the way they think about happiness, they feel Hmm. so much more content, because उनको Hmm. समझ आ गई है surrendering to what is and what that's teaching. हर लम्हे में हमें सवाल पूछना है, what is Allah trying to teach me in this moment? जब हम अपना पिवट करेंगे ना, सवाल क्यों हमारे सवाल गलत हैं, हम सवाल पूछते हैं मैं खुश क्यों नहीं हूँ, खुदारा लाखों चीजें हैं जो आपकी इतनी खूबसूरती से हो रही हैं, उनको तो आप कंप्लीटली डिसरिगार्ड करते हैं। वो चीज जो एक चीज सही नहीं हो रही है, उसी पे सारा आपने नजला जुकाम डाला हुआ है कि ये सब यही गलत है और यही है मेरी जिंदगी का सब कुछ। So of course we're going to feel unhappy, right? So shifting that focus from the negativity and understanding the concept that we are on a journey. This journey was not, Allah didn't say कि मैं दुनिया में आपको भेज रहा हूँ, जाओ खुशी को ढूंढो। अल्लाह ने कहा मुझे ढूंढो। अल्लाह ने कहा कि आप मेरे एट्रीब्यूट्स को यूं अपनाओ कि आप पहन लो, वो आपका हिस्सा बन जाए, वो आपकी कैरेक्टर ट्रेट बन जाए, राइट? जब हम इससे दूर भाग रहे हैं और फिर हम हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, जाके हम 10,000 पाउंड की शॉपिंग करेंगे, हमें लगता है कि हम खुश हो जाएंगे, वो और भी ज्यादा अपसेट होंगे, क्योंकि इतना सारा कुछ करने के बाद भी हम घर आएंगे, हम वही फीलिंग लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमने रूट कॉज को नहीं समझा। सो वी एज within our belief system, we understand that Allah subhanahu wa ta'ala loves us endlessly. It is not in Allah's interest. It is not in Allah's interest to make us want to spend our lives unhappy. He wants joy for us. He wants us to be happy. He's given us all the anecdotes. He's told us how to do all of this. हम उस चीज पे बिल्कुल focus नहीं करते, right? The love that He created us with is incomprehensible. We can't even, it's incomparable to anything else that we know. So really start to think about what that looks like, and in your everyday, start looking for the joyous moments that you completely just dismiss every single day. Uzma, like you said that you help people spiritually and emotionally rather than superficially. Can you explain this a bit? How do you deal with it? I mean, somebody who is disturbed, perturbed, depressed, you know, suicidal, self mutilation. किस तरह आप डील करती हैं स्पिरिचुअली एंड इमोशनली? जाहिर इट्स लॉट टू डू विद वंस इमोशन, यस आई अंडरस्टैंड, बट हाउ डू यू डील विद कुरान के हवाले से? किस तरह से एक शख्स है जो सुसाइडल हो रहा है, आप उसको किस तरह से इनकरेज करेंगी कि टू रिवर्स द डिसीजन? You know, when we get to a stage where we are either suicidal or we're triggered by everything that's happening around us, our relationships are falling apart, हमारी communication किसी के साथ नहीं है, हमने completely अपनी ज़ात को isolate कर लिया है, हम lonely feel करते हैं, even though हमारे आसपास 10-15 लोग होंगे, हमें लगता है कि हम बिल्कुल तन्हा हैं, हमारी कोई support network नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब तक हम उस stage पे पहुंचते हैं ना, there has been years and decades worth of pain that we've been covering, and we don't think about that. We don't even understand it. And so my job is to help you uncover what you're covering. Khuda Ta'ala ne Surah Taha mein kaha कि I know the secrets, and even beyond, what even more hidden than what secrets. What is even more hidden than a secret? जो हम subconsciously अपने अंदर कैरी कर रहे हैं, जो बचपन की प्रोग्रामिंग है, जब से हम पैदा हुए हैं, जब तक हम बड़े हुए हैं, कितने सालों की हमारी परवरिश हुई है, अब यहाँ तक पहुंचे, अब हमारी जिंदगी कंप्लीटली ऐसे लगता है कि चल ही नहीं रही, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। तब तक देयर आर लाखों चीजें
जो हुई हैं, जिनको हमने कभी एक लम्हे की भी अटेंशन नहीं दी, हमने उनको देखा भी नहीं है। अब हम कह रहे हैं कि मेरी बीवी की वजह से, मेरी सास की वजह से, मेरी बहन की वजह से, मेरी फलां की वजह से, ये सब की गलती है, मेरी नहीं है। So हाँ, when ये we बहुत बड़ा yeah, it's called victimhood stage of human consciousness, which means कि आपका human consciousness इतना नैरो है शायद। look, I'm so sorry to say this, but this is the true. मेरी तहकीक से ये है, मैंने बहुत रिसर्च किया कुरान से भी और हदीस से भी और वेस्टर्न जो इस पे रिसर्च हुई उससे भी, कि इवन इन द होली कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि शैतान ने, इवन जब शैतान ने बाव डाउन नहीं किया था आदम अलैहिस्सलाम को, उसने कहा मैं तो आग से बना हूं, ये तो ड्राई मिट्टी से आपने बनाया है, इसको मैं क्यों वो करूंगा सजदा। अल्लाह ने कहा कि तुम नहीं क्यों, अल्लाह ने एक टाइम पीरियड दिया, एक डिस्कशन पॉइंट दिया, अल्लाह ने फौरन उसको बैनिश नहीं कर दिया। देखिए, लुक एट द मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन दिस। ही सेड explain to me why when I commanded you, मैं तुम्हारा खुदा जिसने तुम्हें बनाया और इतने अरसे से तुम मुझे इबादत कर रहे हो, तुम्हें पता था कि मैंने कहा है, सिर्फ यही बात तुम्हारे लिए काफी थी, लेकिन मैंने सिर्फ ये नहीं कहा, मैंने कहा कि तुम बाव डाउन करो, तुमने नहीं किया। उसके बाद तुम्हें ये पता कि मैंने अपने 2 हाथों से, हजरत ये लिखा हुआ है, 2 हाथों से मैंने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, तुमने फिर भी इस चीज को डिसमेंटल किया, नहीं मेरी हुक्म नहीं माना। फिर तुम्हें ये भी पता था कि मैंने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो मैंने अपना नॉलेज उनको आप ट्रांसफर किया है। इस बात पे भी तुमने नहीं सोचा कि मैं क्यों बाव डाउन करूं। फिर उनको मैंने एक एम्बेसडर बनाया, एक वाइस जेरेंट बनाया दुनिया के लिए, ये बात भी तुम्हारे लिए काफी नहीं थी, क्यों तुमने ऐसे किया। सो शैतान started to justify. He didn't use this opportunity कि मुझे खुदा अब पूछ रहा है। अब कॉन्ट्रास्ट देखिए, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को पता चला कि उन्होंने कुछ गलत किया है, वो एकदम से ह्यूमिलिएट फील किया। उन्होंने कहा हमें माफ कर दीजिए खुदा, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हम सारी जिंदगी माफी मांगेंगे, हमें प्लीज माफ कर। उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया और उन्होंने अल्लाह के साथ जो एक रिश्ता था उसको बहाल करने की फौरन कोशिश की। शैतान ने उसके बरक्स किया, उसने कहा कि I'm not gonna bow down, like I'm better than him, I'm not gonna, and he started to justify. वो अपनी तमहीद बांधने लगा कि क्यों। फिर उसने अल्लाह की मर्सी को इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि गिव मी टाइम until the end of time, मैं इसको खराब करूंगा, right? If we understand the psyche of shaitan, and if we compare that with how we deal with our situations and what's happening around us, we will see that there is this there is this distance between us and Allah. और हम justification देते हैं हर चीज के लिए, हम सोचते नहीं है, हम डीप किसी रूट कोज के अंदर नहीं जाते, हम किसी चीज को तहकीक करने के लिए, समझने के लिए टाइम नहीं निकालते, हम अपनी जात को वो कहते हैं कि आई हैव अ जस्टिफिकेशन, हम ब्लेम करते हैं दूसरे पे। शैतान ने ब्लेम किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे कि यू मेड मी, ये कुरान में आयत है, यू मेड मी, कि मेरे साथ ये हुआ है, राइट नाउ आई वांट टाइम until the end of time. हम कहते हैं मेरी सास ऐसी ना होती, वो कहती है मेरी बहू यूं ना होती, तो फिर हमारी जिंदगी बड़ी ही आसान होती। हम खुद अपनी जात के अंदर झांकने की सलाहियत ही नहीं रखते, हम ब्लेम पे फौरन पहुंच जाते हैं। एंड दिस इज डेट्रिमेंटल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। जब भी हम किसी इंसान को देखेंगे वो दूसरे पे पॉइंट कर रहे हैं, वो ये भूल चुका है कि 3 जो उंगलियां पीछे मेरी ही तरफ पॉइंट कर रही हैं। बिल्कुल, एंड सो बिल्कुल। when we have this blaming, this is the lowest level of human consciousness. This is the lowest level. It's called human. This level of human consciousness is level number 1. मेरी सारी teaching ही यहाँ से शुरू होती है। Level 1 of human consciousness is where you don't have the ability to look within. That's the disconnect. So when I meet somebody who's either suicidal or completely triggered, or they don't have good relationships, or they can't get on with anybody in their life, we start with where are you? Let's see how much you use the faculties खुदा ताला ने आपको दी है, उनको कितना आप इस्तेमाल करते हैं, अपनी जात के बारे में कितना आप जानते हैं। और वो दंग रह जाते हैं, खुदा की कसम, वो इतने शौक होते हैं कि मैं तो अपनी जात को जानती ही नहीं हूँ। I had no clue कि I think like this. I had no clue that I think like this. And it is so important for all of us to spend the time to know ourselves. क्योंकि वल्लाहिल अज़ीम हम अल्लाह तक पहुंच ही नहीं सकते जब तक हम अपनी जात को ना जाने। It's impossible. अगर
We अगर have हमने अपनी here, ज़ात को समझ लिया, हमने खुदा को समझ लिया, इस तरह है ना? बिल्कुल ऐसा बिकॉज़ ही है। ही इज़ विदिन So, हमारे दिल में, हमारे हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल exactly. इतनी So अमेज़िंग बात your है तो question, how do you then, when somebody's triggered or when somebody's going through a difficulty, how do you help them spiritually? I help them realize हाँ, who they are. When they realize who they are and what they're carrying, the root cause of how they got to where they are, then they realize the distance between themselves and Allah subhanahu wa ta'ala. And this goes to even for people who are 5 वक्त के नमाजी, रोजे वो सारे रखते हैं, चैरिटी वो देते हैं, वो सारा कुछ करते हैं. Honest to God, sometimes it's so sad that those people don't even know that they're using the very spirituality as a coping mechanism. अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि मैं सही हूँ, हाँ, मैं तो बिल्कुल, नमाज पढ़ने हाँ, वाली हूँ, मैं तो अल्लाह को याद करने वाली हूँ, मैं तो चैरिटी देने वाली हूँ, मैं तो मस्जिद बनवाने में मैंने अपना सोना सारा दे दिया था. पता नहीं इस तरह की हाँ, चीजें हम करते हैं, और ये हमारी खुद की जात को एक थापड़ देने वाली बात है कि यूर ओके, वो वाला हाँ, गलत है. तुम ठीक हो, हाँ, हाँ, तुम सही हो. So it's हाँ, very हाँ, important when you come to a realization. I was working with one of the ladies one time, and we had these discussions, and she said, for the past like 8-9 years, I've been going to this charity on a weekly basis. मैं हर weekend अपना time spend करती थी वहाँ पे, old people's home. और मेरी जॉब क्या थी, मैं वहाँ जाके वॉलंटियर करती थी कि जो उनकी व्हील चेयर है उनको लेके उनको बाहर एक पार्क की सैर करवा के वापस ले आती थी. She said, by doing this work, I realized that I wasn't doing this authentically. I was doing this to ओह! make myself feel better. And she said that I took 3 weeks off from this voluntary thing. And I sat and I cried about this. कि देखो कितना distance था मेरे और अल्लाह के दरमियान. कि मैंने एक अच्छी चीज को यूज करके मैंने कहा कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी सही हूँ, और मैं कितनी दूर थी. फिर मैं जब दोबारा गई 3 हफ्ते ऑफ करके अपना सेल्फ वर्क करके अपने आप को समझने के बाद, I was so deeply connected with those old people. They said, there वाह! is something different about you. There is something different. And there was something different about me, she said. And what that was, it हुँ, was me being very authentic. There was no fakeness. मैं अपने फोन पर टिक टिक नहीं कर रही थी जब मैं उनकी एक हाथ से वो चेयर चला रही हूँ और दूसरे हाथ से मैं बोर हो रही हूँ और मैं आ रही हूँ, मैं फिर भी आ रही हूँ, लेकिन मेरा दिल वहां नहीं था. अब जब मैं जाती हूँ, दिलवाने मैं पूरी की पूरी वहां होती हूँ. माई कॉन्शियस एंड माई सबकॉन्शियस बीइंग, मेरा दिल, सब कुछ पूरा मैं लेके जाती हूँ वहां. मैं हाजिर होती हूँ उनके साथ और उनको मजा आता है मेरी उसके मीटिंग के साथ. एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट. ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है कि जो लोग मुश्किल में गुजरे. हर इंसान के लिए जरूरी है कि वो खुद की जात को जाने, और क्योंकि हमें अल्लाह के सामने हाजिर नाजिर होना है, और अब वक्त बहुत हाँ, करीब है कि हमारे मौलाना अलैहिस्सलाम अज्जल फरज हम जल्दी आएंगे, और हमें उनके साथ फेस करना है. और सिर्फ उनको फेस नहीं करना, उनका एक पीरियड होगा जब हमें उनकी हेल्प करनी है. हम किस कैपेसिटी हुँ, में उनकी हेल्प करेंगे जब हम अपनी जात को ही नहीं जानते? हमारी स्पेशलिटी क्या है, हमारे कैरेक्टर में सबसे अच्छी चीज क्या है, हमारे कैरेक्टर में सबसे बुरी चीज क्या है, हम कौन है, हम क्या कर सकते हैं. मौला को तो शू साफ करने वाले भी चाहिए होंगे और बड़े बड़े जर्नल भी चाहिए होंगे. उनमें से किस कैटेगरी में मैं आती हूँ, ये एक सवाल कब हम वाह! पूछेंगे? ओह माय गुडनेस, माय गॉड, अमेजिंग, माशाल्लाह. ओके, एक एक और सवाल है. आई थिंक पहले भी मैंने शायद आपसे मेंशन किया था कि सबसे पहले तो या थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन, लाइक न्यूरो लिंग्विस्टिक क्या है? न्यूरो लिंग्विस्टिक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ये है कि इट्स बेसिकली a concept. Sorry, I कॉन्सेप्ट. misheard you. हाँ जी. Basically, it's a thought-provoking personal and professional development discipline which provides you the understanding of human potential and how to communicate at a much deeper level. जब हम किसी भी चीज में अच्छा, न्यूरो की बात करते हैं तो that helps your mind, it helps you about the consciousness कि आपकी decision making skills या आपके अच्छा, subconscious level पे आप ऑपरेट करते हैं. लिंग्विस्टिक अच्छा. जो वर्ड है, दिस इज मच मोर अबाउट कम्युनिकेशन, दिस इज मच मोर अबाउट being clear in the way that you speak, both internally to your own self and also externally to other people. And ओके. programming के हवाले से ये है कि जो हम लेके बैठे हैं बचपन से लेकर अभी तक, जो हमारे सबकॉन्शियस में चीजें बैठी हुई हैं, ये क्या चीजें हुँ, और ये हमारी जिंदगी किस तरह से हुँ. वो करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं. So, सो न्यूरो first of all, लिंग्विस्ट प्रोग्रामिंग. what you do is that you probe into the subconscious first, and again, bring it out into the conscious, and then you treat it. Is it like that?
So basically it starts with like a symptom. कहीं भी कुछ भी हम शुरू करते हैं, जब भी मेरे पास कोई बंदा आता है तो हम कभी भी रूट कोज पे फौरन तो नहीं ना जा सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है. पहले हम उस चीज के हाँ, बारे में बात करेंगे. Let's say somebody is going through a divorce, they will come to me and they will be like devastated कि तलाक हो रही है, बच्चे involved हैं, financially difficulty है, ये हुआ. That's the symptom. ये top of the iceberg की चीज है, ठीक है. This is just right at the tip. इसके राइट। पीछे हजारों चीजें हैं. सो वी काइंड ऑफ डिग डीपर. फर्स्ट बिहेवियर जो है उसको एनालाइज करते हैं कि ये किस जगह से आती है, कौन सी प्रोग्रामिंग से आपका ये बिहेवियर है, इसके साथ जिस तरह आप डील करते हैं वो क्यों है, वो कैसे है, आपकी सबकॉन्शियस में है क्या चीज. और फिर आहिस्ता आहिस्ता वी स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि आपकी इस चीज में कम्युनिकेशन कैसे है, आपका दिमाग इस चीज को सोचता कैसे, आपका व्यू क्या है, आप इस चीज में मीनिंग क्या ऐड करते हैं, जो भी कुछ आपकी जिंदगी में हो रहा है कौन सा मीनिंग आप ऐड करते हैं. अब देखिए जिंदगी में कुछ भी चीज होती है तो हम ये कहते हैं कि when I look at something, for example, I draw up a conclusion about that thing. कुछ भी है, चाहे वो किसी की तलाक है, मेरी अपनी कोई हार्डशिप है, किसी के साथ में कोई काम कर रही हूँ. I will see it and I will have this view about it. I will add some meaning to it, right? Now that meaning is one view. There can be hundreds and thousands of other views of that same situation. और वेरी सिंपल एग्जांपल इसका है कि अगर हम, जैसे आप मेरे ऑपोजिट बैठी, अगर हम एक ही रूम में बैठे होते तो बीच में ऐसे एक टेबल रख के उस पे एक पेपर पे मैं अपनी तरफ से 6 लिख दूंगी और जहां आप बैठी हैं आपको 9 नजर आएगा. अब मैं पागल हो जाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि ये 6 ही है, आप पागल हो जाएंगे, आप बताएंगे नहीं ये 9 है. जब तक आप उठ के मेरी तरफ नहीं आएंगी और यहाँ से इस जाविये से नहीं देखेंगी, आपको कभी भी यकीन नहीं होगा कि ये 6 है. आपको कुछ करना है, एक्शन है. जब मैं उठ के अपनी सीट से आपके पीछे जाऊंगी और वो व्यू देखूंगी, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, फिर मुझे लगे ओह या यू आर राइट, आई डिडंट रियलाइज. आई रियलाइज नाउ बिकॉज आई माई सेल्फ. माई चेयर से मैं उठी हूँ, मैंने कोई एक्शन लिया, मैंने इसके बारे में सोचा है, मैंने फिर उसके बारे में कुछ किया, तो फिर मुझे नजर आया ओह यार ये तो सही कह रही थी. उनके जाविये से ये हमेशा से था, मेरे जाविये से हमेशा ये 6 था, ये 6 ही रहेगा. इस जाविये से ये 9 ही रहेगा, उस जाविये से हमें कुछ करना है इस पर्सपेक्टिव को, इस मीनिंग को चेंज करने के लिए. सो वी हैव टू गो इनटू व्हाट डू वी होल्ड, व्हाई डू वी होल्ड इट, व्हाट मीनिंग डज दैट गिव टू माय लाइफ. अगर तलाक का एग्जांपल, आई डील विद अ लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग थ्रू दिस. अगर कोई है औरत, वो इसको इतने बेटर तरीके से डील कर रही है कि हाउ डेयर ही इज लीविंग मी, और वो कोई और औरत को मिल गई है फलां फलां. You know, when we look at the meanings of things and when we can shift from that meaning and look at the whole thing in a whole different way, it is life changing. It is life changing. In a moment's time, it can literally shift your narrative and perspective about how you see that thing, how that impacts you anymore, how you are going to go about dealing with that situation from here on out. So it's extremely important that we have this very broad view of all the different things that are happening and question ourselves कि मैं इस perspective को अपनी जान से भी ज्यादा होल्ड क्यों कर रही हूँ, इसको लेट गो करने में प्रॉब्लम क्या है. क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि मैंने जो मीनिंग अटैच कर लिया है उसको छोड़ने का मतलब होगा कि मुझे अपनी सारी जो सोच है उसको तब्दील करना पड़ेगा. दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, दैट्स अ बिग आस्क, राइट. खुद के अंदर झांक ना, ये तो कितना बड़ा काम है. इट्स सो मच इजियर टू से वो सबसे गंदा बंदा है उसकी वजह से ये सारा हुआ है, सो मच इजियर, राइट. बट इंट्रोस्पेक्शन इज अ डिफिकल्ट मैटर. दिस इज व्हाई मोस्ट पीपल डोंट गो इनटू दिस. वो उजागर करने वाली बात होती है. हर किसी के पास ये हिम्मत नहीं है कि वो इतना नेकेड सच अपने बारे में सुन सकें और तहकीक कर सकें. लेकिन दोज हु डू, देयर लाइव्स चेंज कंप्लीटली. So, acha, you are mashallah, you're a life coach. So, what is the difference between a psychologist and you? Psychologists, jo hain, they actually, I think they need to put a smile on your face, but you are showing us the mirror, exactly what we are. That's a good analogy, actually. So psychologists, much deeper stuff. I mean, to give you a very, very small, like a example, like a trivial type of an example for you to understand this, कि जब आप मेरे पास आएंगी कोई प्रॉब्लम लेके, तो मैं उसी प्रॉब्लम को इस्तेमाल करते हुए I will show you how to bounce forward into your life.
yes, you have this problem, we acknowledge it, we understand it, how do we move on from this? When psychologists कहेंगे okay ये problem है, let's इसको open करते हैं, इसको उसको पूरा वो देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, तो वो उसी पे रह जाता है अक्सर. So I think moving forward is a very powerful. This is why, I mean, I went through a lot myself, and I went through both, like psychotherapy and also coaching, and I found coaching so much more powerful, so much more powerful in my life and in the lives of people that I teach. So it's a very powerful mechanism to spring you forward into life. कि ये एक्नॉलेज करते हैं, ये हम समझते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई मसला है, इसको इग्नोर नहीं करना. we're not about just like letting it go. रूट कोज फिर भी पता लगाना है, लेकिन उस रूट के कोज को लेके बैठ ही नहीं जाना है, हमने आगे चलना है. अब हमें पता चल गया कि कुछ हुआ है, अब इसको इस्तेमाल कर, इसमें से लाइफ स्किल्स, जैसे वही तलाक वाला एग्जांपल अगर ले तो in a talaq often women say that I'm back to square one, right? I'm back to square one. And as a life coach, I will say to them, there is no such thing as square one. How can you go to square one? It's impossible for you to go to square one, because this marriage of 10 years, 15 years, 7 years, जो भी कुछ था, इसमें क्या कुछ आपको learn करने के लिए मिला है. What to avoid, what to get, how to avoid, उसमें से कौन सी learning points है, क्या क्या life skills हैं जो transferable skills हैं, जो आपको हमेशा ताहयात आपको काम आएंगी. लेकिन उसको देखने के लिए आपको एक किस्म का शुक्र अदा करना पड़ता है अल्लाह के लिए, अल्लाह को, कि ये हादसा मेरे साथ हुआ है and I'm grateful. That's a big thing right? Actually, it's really, wow. जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा धचका दिया, सबसे ज्यादा हर्ट किया, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हो जाऊं, ये क्या कह रही है? I'm saying that if you ignore that and you give yourself that meaning that I'm back to square one, you've dismantled your life. I'm helping you to say this has given you 10 notches ahead of where you were before. Right? How do you use these now to go on into your life in the future, so that you can be a much more powerful human being who can connect to Allah subhanahu wa ta'ala with nothing but authenticity, the spirit that He blew inside of you, using that, being the most connected person that you can be to Allah subhanahu wa ta'ala. This self-knowledge is a very powerful thing. वाह, जबरदस्त. मतलब इतनी अमेजिंग बातें उज़्मा आप बता रही हैं यहाँ पर कि मतलब आई एम लर्निंग सो मच फ्रॉम यू, फ्रॉम योर टॉक. कमिंग टू प्रॉब्ली, अब हमारे प्रोग्राम में ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन ये कि कैन आई रिक्वेस्ट यू टू एक्सप्लेन होपोनोपोनो, जो हवाइन एक प्रैक्टिस है, वो क्या है और किस चीज़ के लिए ये मुफीद और कारआमद साबित होगी, एट व्हाट स्टेज ऑफ मेंटल इश्यूज के लिए, इमोशनल के लिए या फिजिकल के लिए? If you can explain it, please. Yes. So Ho'oponopono is a very beautiful practice, something that I took a lot of time learning about. It's an excellent complementary self-improvement anecdote, if you like. If you're going through coaching, if you're going through psychotherapy, if you're going through counseling or something like that, उसके साथ अगर आप इस चीज़ को add करेंगे तो बहुत ही एक wonderful इसमें से चीज़ें होती हैं. So Ho'oponopono is basically a method of cleansing yourself and cleansing others around you. So it's almost like a forgiveness method that's deep seated in the Hawaiian culture, and it's like a 4-step process, if you like, and there's a lot of people that use it now. Basically उसमें 4 चीजें जो वो कहते हैं regularly: I love you, I am sorry, please forgive me, and thank you. ये 4 चीजों का वो इस्तेमाल करते हैं. वेरी सिंपल 4 स्टेटमेंट्स हैं, एंड व्हेन वी थिंक अबाउट देम, हम इनको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑब्वियसली इफ इट्स हवाईयन, इट्स नॉट फ्रॉम एन इस्लामिक ट्रेडिशन, सो आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट यू नो ये कोई इतना मतलब इस्लाम की चीज़ है, लेकिन कोई भी चीज़ कहीं से भी, ये हदीस में आप चीन तक जाएं, आप अपना इल्म लेने के लिए जहाँ भी जाएं, अच्छी चीज़ किसी से भी सीखें. मैंने उलमा से भी इस चीज़ का पता लगाया. तो अगर अच्छी चीज़ कहीं से मिलती है और उसके साथ अब अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, तो यूज़ इट, एब्सोल्युटली यूज़ इट. सो इसमें जो आई एम सॉरी का कॉन्सेप्ट है इज़ ऑब्वियसली वेरी मच ट्यून्ड टू रिपेंटेंस. Understanding that sometimes we have to forgive people who don't even ask for an apology. हमारी ग्रोथ इस हद वो इंसान जो आपसे
माफी भी नहीं मांगता, उसको माफ करने की सलाहियत रखना एक बड़ी चीज है। क्या एंड वाह वाह। इस आई एम सॉरी में, आई एम सॉरी दैट आई हम्म, इवन थॉट इल ऑफ यू, आई एम सॉरी दैट यू हैड टू बी द क्रूअल पर्सन, the person who hurt me, in order for me to learn forgiveness for myself. हम्म, So there is a very वाह, deep way of thinking about the other person who has hurt you, and there is a whole हम्म, process to get to that stage. You can genuinely, authentically mean that, right? So हम्म, it's a step to realize that you are the one who's responsible of what's going हम्म, on in your mind, right? It seems like it's outside of you, but when you start to internalize even the other people who are hurting you, you will see that it will come back to you. You will take responsibility, और जब आप अपनी अपने लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आपको खुद नजर आएगा कि दूसरे लोग भी उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। तो जो दूसरा है, प्लीज फॉरगिव मी हाँ, फॉर हेटिंग यू, प्लीज फॉरगिव मी फॉर ब्लेमिंग यू। ये जो विक्टिमहुड स्टेज में स्टक हुए हुए लोग होते हैं कि हमेशा एक ही जगह पे फंसे रह जाते हैं, उनको बाहर निकलने का भी रास्ता नहीं मिलता। प्लीज फॉरगिव मी फॉर इवन वांटिंग टू सी यू सफर, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो इतनी ग्रज होल्ड करते हैं कि वो कहते हैं काश इनका बच्चा अल्लाह ना करे वो हो जाए, काश इनके साथ ये हम्म, हादसा हो जाए। दिल, वो कभी भी ये खुल के नहीं कहेंगे, लेकिन दिल में उनके इजहार होता है कहीं ना कहीं कि उनके साथ अच्छी चीजें हम्म, क्यों कर रहा है अल्लाह, उन्होंने मेरे साथ इस तरह का हम्म, जुल्म किया है। ये हम्म, एक क्लेंजिंग का तरीका है कि आप अपनी जात को इस कदर, अपनी मैं को खत्म कर दें कि खुदा खुदा पे जब हम छोड़ते हैं ना, ये तवक्कल इतनी बड़ी चीज है कि इसमें बड़ा ही हम्म, सुकून है जो किसी चीज में हम्म, नहीं है। तो इसका जो नेक्स्ट है, हम्म, सॉरी, इसका जो नेक्स्ट या है आई एम, थैंक यू। पहले का आई एम सॉरी, देन सेकंड वन इज प्लीज फॉरगिव मी, एंड द थर्ड वन इज आई लव यू, आई फॉरगिव यू। थैंक यू और फिर आई लव यू को मैं मतलब किसी भी उसमें कर सकते हैं, ऑर्डर में, कोई जरूरी नहीं अच्छा, इसी ऑर्डर में हो। लेकिन जब अच्छा, थैंक यू हम करते हैं, देखें, ग्रैटिट्यूड इज सच अ बिग पार्ट ऑफ इस्लाम। इस हद तक कि बिल्कुल, जब ये गुफ्तगू हो रही थी ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला और शैतान के दरमियान, तो शैतान ने बड़े ही खुले तरीके से बता दिया, उसने ये कहा कि मैं आपकी जो क्रिएशन है उसको गुमराह करूंगा, और हम्म, तकरीबन सारे लोग मेरे हो जाएंगे हम्म, बगैर उनके वो शुक्र अदा करने वाले हैं। हम्म, उनको मैं टच नहीं कर सकता जो शुक्र अदा करने वाले हैं। क्या बात, वाह 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 वाह। बाकी सबको मैं अपना बना सकता हूँ, बड़े आसानी से मेरे अंदर आ जाएंगे जो शुक्र इल्ला अदा करने इनके वाले जो हैं। आपके शुक्रगुजार हैं, इल्ला वो उनके जो जो अल्लाह के शुक्रगुजार में से हैं। अल्लाह के वाह। शुक्रगुजार हैं। चंद अच्छा, वो नंबर लोग जो 4। मुखलिस, हाँ, ये जो थैंक यू में आता है। और नंबर 4 आई लव यू। आई लव यू कितना एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। द हुँ, गिफ्ट ऑफ सफरिंग, द गिफ्ट ऑफ सफरिंग। जब हम इस नहज पे पहुंच जाते हैं कि अपनी जात को इतना जाने कि हमारी जो सफरिंग है वो हमारी गिफ्ट थी हुँ, अल्लाह की तरफ से, उसको हमने खोला, उसको हमने सराहा, उसको हमने देखा, उसको हमने अपनाया, उसके अंदर से जो हमारे लिए लर्निंग पॉइंट्स है उनको उनको हमने अपनी जात में ट्रांसफर किया, और उसको फिर हम स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। This is a beautiful thing. This is a step that can bring you very very close to Allah subhanahu wa ta'ala, कि आपकी जिंदगी में जो चीजें हुई हैं, instead of being very resentful towards them, being so grateful that you can say I love the suffering that happened to me, because it brought me राइट, so much closer, helped me understand who I am, helped me get to know the universe within me. So every breath that I'm using even to convey this message, कब हम हाँ, शुक्र अदा कर सकते हैं इस हद तक कि I love you for giving me the ability to even do this. I love you for ओह! the ability of being able to have these conversations and to be able to even acknowledge your existence. कितनी कितनी चीजें हैं जिनके लिए हम deeper जा सकते हैं. So it's a very deep, meaningful concept of really trying to gain as much closeness to Allah subhanahu wa ta'ala as possible. And even though it's not from an Islamic background, it can very much be utilized as such, inshallah. मतलब ये आप कहने का मतलब ये कि इफ समबडी हैज़ हर्ट यू, लेकिन आप यू थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ बिकॉज़ इट्स गिविंग यू एन अपॉर्च्युनिटी टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड सेइंग आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। बहुत बहुत यानी कि इसके लिए जिगरा चाहिए होता है। क्या बड़ा कहते हैं? जिगर चाहिए। और खाली ये नहीं, देखिए, कहने को तो बड़े आसान अल्फाज हैं, हम दिन में 50 हाँ, मरतबा कह दें, वैसे भी हम बड़े बिल्कुल, आसानी से ना भी लेते हैं, और फिर हम कहते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बड़े आसानी से हम करते हैं। लेकिन इसमें हाँ, मसला हाँ, क्या है, देखें, इसमें
बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि ज़िक्र इलाही ऐसी चीज़ है कि जो हम ताहयात करते रहें, उससे ज़्यादा करते रहें, कभी भी इनफ नहीं है। ये एक वो चीज़ है जिसमें एक्सेस हम कर सकते हैं, बाकी हर चीज़ में हमें एक बैलेंस की ज़रूरत है। लेकिन खुदा के ज़िक्र में हमें बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, वो हम दिन-रात कर सकते हैं, मतलब उसमें कोई टॉप लेवल वो नहीं है, वो आप जब जितना करें काम में। बट एंड अल्लाह एक्सेप्ट्स इट, क्योंकि अल्लाह की मर्सी इस हद तक है कि वो हम टूटा-फूटा अल्फाज भी कहेंगे ना, वो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि अल्लाह अल्लाह इतना इतना रहीम और करीम है। लेकिन हाँ, इसमें मसला क्या है, देखिए अल्लाह ने कहा कि मैंने इंसान को बनाया कि वो अशरफुल मखलूक है, इस हद तक कि वो एंजल से भी ज़्यादा हो सकता है, और मैंने अच्छा, उसको यूँ बनाया कि वो अगर अपनी फ्री विल को इस्तेमाल करते हुए बुरे काम करेगा, तो वो जानवरों से भी ज़्यादा बदतर हो जाएगा। तो जब हम तस्बीह और तस्बीह अल्लाह की पढ़ते हैं और उसमें हमारी कोई सोच नहीं है, उसमें हमारा कोई तब्दील कुछ नहीं हो रहा, उसमें हमारा दिल उसी जगह है, जिनसे हमें नफ़रत हाँ, थी 20 साल पहले, उनसे आज भी हम नफ़रत करते हैं, जिनको हम रोड पे देख के रोड क्रॉस करके दूसरी साइड पे चले जाते हैं, जिन पे हमने किसी हुँ, का हक मारा और आज तक हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम उनको जाके कह सकें कि हमने आपका हक मारा था, ये हम आपको हुँ, वापस कर रहे हैं। जिसमें हम इतनी हेट्रेड लिए घूमते-फिरते हैं और बड़े हुँ, फन्ने-खान बने हुए हैं, हम अब इस्लाम जानते हैं क्योंकि हमने तस्बीह हाथ में पकड़ ली है। अल्लाह को हाँ, सब पता है कि हमारे अंदर बिल्कुल, क्या है। हमारा काम है कि बेशक, हम जाने कि हमारे अंदर क्या है। जब हम हुँ, इस हुँ, नॉलेज के साथ तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह पढ़ेंगे, ये हमें आसमान तक ले जाएगी। सुभान अल्लाह, क्योंकि हम विद नॉलेज विद कॉन्शियसनेस कर रहे हैं, ये जान के कि हाँ, फलां के साथ मैंने ये काम किया था, उसके लिए मैंने आज माफी मांगी है। अल्लाह हाँ, अंडरस्टैंड्स। नम ओह हो माय के बस ब्ला 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 लगाए हुए हैं, इट डजंट हाँ, सर्व मच। आई मीन बहुत इट्स ब्यूटीफुल, आई मीन अल्लाह फिर भी एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर हम रेवोल्यूशन चाहते हैं अपने अंदर, अगर हम चेंज चाहते हैं अपने अंदर, तो उसके लिए हमारी ये जो सोच है और हमारा जो दिल है, इसमें अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। और फेयरनेस दिस इज अ हुँ, लर्निंग, मतलब इसमें हमें काम करना पड़ता है, ये कोई ऐवे ही नहीं आ जाती हमारे पास। थैंक यू। उज़्मा बहुत इंटरेस्टिंग टॉक थी, ऑनेस्टली बहुत मैं खुद सीख रही हूँ और आई एम श्योर जितने लिसनर्स हैं वो भी सीख रहे होंगे, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा एंड ये पता है क्या ये स्पिरिचुअल क्लेंजिंग है मैं समझती हूँ पीरियोडिकली हमें ये करना पड़ेगा प्रोग्राम, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह हमें अमेजिंग, हिम्मत थैंक दे, यू, टाइम दे। थैंक जज़ाकल्लाह यू खैर, सो मच, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। और जहाँ जो भी तुम्हारी भी परेशानी इंशाल्लाह बहुत सदक़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वो ठीक हो जाए तुम्हारे बेटे के हवाले से मैं कह रही हूँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू जान, टेक केयर। नाज़रीन सलाम अलैकुम वाले इतनी मैं एनग्रॉस हो गई थी इस डिस्कशन में यकीनी मुझे बहुत लुत्फ़ आया है, बहुत कुछ सीखा है और यकीनी आपने भी अल जिसने